नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सब्सक्राइब बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तितिभा आसन की, और उसको मैं ब्रेक डाउन करने वाले कुछ ऐसे बेसिक आसना जो अगर आप इजीली कर सकते हैं देन तितिभा आसना इज नॉट अ वेरी बिग डील। सो आइए जानते हैं इसकी एनाटॉमी क्या है, क्या मसल एंगेजमेंट होनी चाहिए और किस मसल में हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। Let's learn the anatomy of Titibha Asana. If you look at the asana, you need flexible adductors, the muscles present in the inner thigh, the adductor magnus, longus and brevis, in order to allow the legs to spread wide and maintain the balance while internally rotating the hips. The hamstring muscles, bicep femoris, semitendinous and semimembranous. They need to be highly flexible to allow the legs to extend and lift up. The erector spinae and the quadratus lumboris needs to be flexible to allow the spine to lengthen while in forward fold. The wrist extensor and flexors needs to be flexible and also strong to support the body weight in this arm balance. A strong core muscle, the transverse abdominis, rectus abdominis and obliques are crucial to lift and hold the weight while maintaining the balance. The core plays a significant role in stabilizing the body in this challenging pose. The first asana is the Upavishtkona asana, or the wide angle seated forward bend. Now this asana stretches the hamstrings, the bicep femoris, semitendinous and semimembranous, the adductor muscles in the inner thigh, the adductor magnus, longus and brevis. It helps to release the tension in the inner thigh and improve the hip mobility, allowing you to achieve the necessary range of motion for wide leg position in Titibha. And also the lower back, the erector spinae. Now flexibility in the lower back and spine is essential for maintaining the length in the torso during Titibha asana. Next asana is the Bakh asana. Now Bakh asana stretches the hamstrings and the calf muscles, the gastrocnemius and the soleus muscle while working on the hip flexor. Bakh asana also teaches balance and arm strength, which is essential in Titibha asana. The core strength developed here helps to stabilize the body when you lift your legs in arm balances. The next asana is the Navasana, or the boat pose. Now this asana strengthens the core muscles, the rectus abdominis, the transverse abdominis and the hip flexors, the psoas and the ilias. Now Navasana develops core strength and stability, which is critical for lifting the legs and holding them in air during the asana. The last and the final asana is the Baddha Kona asana B. Now this asana helps to develop the hip and hamstring flexibility. It opens the pelvic and lower back strength. Now these are needed to perform the Titibha asana. This pose also stretches the hip flexors, the iliopsoas muscle, and also open up the pelvic muscles which are engaged when you're balancing in the asana. The forward fold in Baddha Kona asana B stretches the erector spinae muscles along the spine and the quadratus lumboris in the lower back, which is also required when you get into Titibha asana. Thank you for watching my video. I hope you learned something new in this video. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. मैं अपने चैनल में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आसनास को ब्रेक डाउन करती हूँ, कैसे हम इजीली उसको अचीव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन डिजीजेस जिनके सोल्यूशन आयुर्वेदा और योगा में छुपे हैं, मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे डालती हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आप एक न्यू योगा टीचर है जिसको अपनी जर्नी आगे कैसे बढ़ाया जाए बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं है, देन प्लीज़ फॉलो आरोग्यम योगा एंड वेलनेस बाय सप्तशिखा। वो अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ डालती है टू हेल्प न्यू योगा टीचर्स टू ग्रो इन देयर जर्नी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आसना सीखना चाहते हैं इजी तरीके से और एक योगा टीचर बनना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन दिस नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।